important, that is important. Can overfitting happen even if the data has no noise? The answer is yes. And the reason is, if you have very small number of points and you try to fit a very complicated model with those points, and there might be several models that exactly fit the model. For example, exactly fit the points. For example, just to see a very clean case, let's say I have just 2 points. Let's say I have just 2 points, and I decided to fit a 5 degree polynomial in it. Now, 5 degree polynomial might go like this. Okay, one 5 degree polynomial is when several coefficients of 0 is in a line, it might go like this. So there are several models that exactly fit this data. There are several models that exactly fit this data. Because the data points are very small, so the exact pattern was governed by having a lot of data points. So you may have a tendency to overfit. No. So yes. एक पॉइंट करता हूँ लेकिन मुझे 22 पॉइंट्स that is of training data की दिया गया और एक्चुअल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेटिव नहीं है किसी एक स्पेसिफिक टाइप के पॉइंट्स इसमें निकाल के दे दिए गए then it shouldn't be called training data, so to speak. So training data, I mean, the assumption is it actually represents that sample represents the population. So that is okay. Having said that, theoretically yes, we can still overfit. With respect to the number of points, we can come up with a model that can overfit those number of points. So if you have 100 points, we can come up with a very complicated model that exactly fits the 100 points, even if the 100 points are noise free. Make sense? But practically, you never decide a model without seeing the quantity of the data you have. Usually you have amount of training data, and with respect to the number of training data points available, you decide the model with respect to that. And if you have less number of points available, normally you decide the model accordingly, the simpler and stuff like that. So practically, if the data has no noise, and if the data has noise or no noise, whatever, practically you see the number of points and then you decide the model. So practically this is not really the concern, that if you have data with no noise, will you still overfit or not? The only possibility of overfitting the data which is noise free is you never see the quantity of the data available and you fit a very high degree model. And this practically doesn't happen. Practically you see the data, the number of data points, and then you decide the model. So theoretically yes, it can happen, but practically, I mean, this is really not recommended that जब कोई भी ऐसा करेगा नहीं वो डेटा लेके आएगा और डेटा के पॉइंट्स 10 हैं तो बोलेगा अच्छा मैं इसमें धक्के से 20 डिग्री पर फिट करके आऊँगा, ऐसा होता नहीं है। मेक सेंस? अगर आप ऐसा करेंगे और फिर डेटा में नॉइज ना भी हो तो ओवरफिटिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली. सो द थ्योरेटिकल आंसर इज यस, द प्रैक्टिकल आंसर इज नो. मेक सेंस? यस, नो. प्रैक्टिकली नॉइज फ्री डेटा मिल सकता है? We don't know that. We don't know that. Okay. So the third part of the question was what are the practical ways to avoid overfitting? One way is to use a simple model, another way is to require more data. These two are, I mean, requiring more data and having more data available is close to impossible in almost all the cases. Trying simple model may be underfitting and stuff like that. So the most popular and practical way of overfitting is regularization. So you do regularization and do that stuff. Make sense? Yes. Okay. So that's the question number 1 and that's the brief answer. Question number 2 was, in contrast to the linear regression, listen to this question carefully. In contrast to the linear regression, in logistic regression, we apply gradient descent to find out the best parameters for these. So the real question is, what is the need of the gradient descent in logistic regression and why we have not applied it in linear regression? So I have answered this question repeatedly in the class, so I'm again answering this.
in linear regression, the cost function is convex. In logistic regression, the cost function is convex, which means if you find out a point W where the derivative is 0, that point is global minimum. Yes. In linear regression case and in logistic regression case both. Clear? In linear regression, it just turns out that finding out W that makes the derivative 0 is really quick and direct. So you compute the derivative with respect to W. You put that derivative equals to 0 and you can solve for W without moving into several complicated steps or iterations. So directly in the closed form where you can find out the W. So there is no need to apply gradient descent there in the linear regression. There is no need. You can apply if you want. If you want to find out W that makes derivative 0 iteratively, you can do it. And you will convert to the same W that you have found in the direct way. But that is a kind of overkilling. I mean, gradient descent, introducing वहाँ पे हुआ था जहाँ पे you cannot find out, there is no closed form solution and you cannot find out the W directly. So you iteratively go to find out the W progressively. So in logistic regression, the cost function is convex, which means wherever the derivative is 0, that's the global minimum. But when you take the derivative, put it equal to 0, there is no way to solve the equation for W directly. Make sense? And now what you really do is you say, okay, what is the W that makes the derivative 0? And the way to find out this is to start with some W. See the cost function has what value, and then see what next W should I, what changes in W should I make so that the error becomes minimum. And the fastest, if you want the fastest decay in the error, the direction in which you should update your W happen to be the direction negative of the gradient direction. So what you really do is you compute the gradient, and for your wherever you started from the W, you subtract or you add, you take a step in the negative of the gradient direction, and there you again evaluate the function, the error function. Again, there will be a very large value, there may be, but smaller than the previous one. Okay? And then you take further step, gradient computed at that point. And you keep on moving until W doesn't change. When W will not change? You see this equation? W new is equal to W old minus alpha dW d error over dW. Okay? And you have to repeat this. Repeat this until W new become very close to W old. You keep on doing this. Make sense? That's what you do. When W new becomes equal to W old, exactly when? When this quantity becomes 0. Alpha is not 0. So what is 0? That's the point you should stop. You have found where the derivative is 0. Make sense? Yes. So आपने error function के लिए वो W ढूंढना था ना जो उसके derivative को 0 करे. You have found this iteratively, and you move towards that point iteratively. And there was a need for that in logistic regression because there was no closed form solution. Make sense? Yes. So that's it. And why we haven't applied gradient descent in linear regression? We can apply, but I mean it is not justified there with respect to the time. You'll be spending a lot of time. I mean you can compute the gradient and apply gradient descent and finally find out the W in linear regression as well. But I mean there is a direct way to compute it. Why you are spending a lot of time? Yes. लेकिन global minimum directly निकल आएगा और gradient descent से निकलेगा भैया. Gradient descent will take much more time, so that's kind of overkilling in linear regression. Make sense? Okay. Okay. The last question is, so the third question was a numerical question. You have to plug in the data and you have to see it has class 1 or 0. I'm not discussing that right
write down. It's a numerical kind of question. Last question was, what are the practical ways to select a pattern class or model class? Again, that is discussed tons of time in class. The practical way is cross validation. That's it. That's a practical way. Yes? So the midterm was easy, you get good marks, hopefully, and it was made easy. Just to not discourage you and not give you very lengthy kind of derivations. As long as you are doing them and you know what they are doing. As long as you are working on those kind of derivations in the code in MATLAB or some other language, as long as you can apply them, I'm not going to penalize you if you're not active or not. Make sense? Yes. That's good. That's good. And you will acknowledge कि ये इतनी ज़्यादा practice class में भी हुई है. मैं भी करके आया था. So okay. Okay, something जो कि gradient descent में discuss हुआ है, तो let me discuss something more about this gradient descent and the gradient of it, and then we will move toward inshallah the theory of kernels. Kernel we have introduced in the last lecture, kernels. Today I will describe the kernel in a more mathematical way, and we will inshallah wrap up the discussion of kernels today. But before that, let me discuss this gradient descent, a particular variant of the gradient descent. In the current setting means a big data setting. याद रखें, by having more and more data available, now the new emerging field is really the big data analytics. जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा आई जा रहा है, लोग तस्वीरें खींचते हैं, नीचे कमेंट करते हैं, तस्वीर उसके नीचे कमेंट, that is kind of a labelized data, and people are uploading more and more labelized data to you, and you can analyze the data. More and more data is now available. कुछ अर्सा पहले ना सेंसर्स इतने अच्छे थे कि डेटा बहुत ज़्यादा अपलोड होता, बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता, और अगर बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल होता भी तो कोई कंप्यूटेशन पावर ऐसी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा डेटा को यूटिलाइज कर लिया जाता. Now a lot of data is available and computation power is very, very high. You have GPU machines and stuff like that. So the trend of the classical machine learning algorithms really changed too much. And one basic trend I want to discuss in the context of gradient descent is online learning trend. Let me discuss what do we mean by online learning. The contrast to it is offline learning. Online learning, offline learning. So let me discuss what do we mean by online learning. So first of all, I'm discussing the offline learning or the batch learning that we have done so far. Whatever we have done so far is batch learning or offline learning. That means this. You have training data. You come up with W star, and now the test points comes in. Test points come in. You predict the labels of the test points. Okay. Now you have training data X and Y. You have W star, and it just so happen that a new data come in with labels. There is no point to not utilize that data in your training process because that's a labelized data. It can be treated as a training data. Once the data is labelized, you should treat that data. You should incorporate that data in your training process because more and more data is coming. Make sense? Yes. Now you have data. You have W star. You have your algorithm. Trained very well, W star is there, but the new data comes in with the labels. Now you want this data to be treated as the training data as well, and you want your W star that incorporate the new data as well. Make sense? One way is this. You scratch or you just delete your W star like you have never done learning already. You pick your new data, you include the new data in your existing training data. Now you have larger training data set, and you start your learning process from scratch, from zero, and come up with a W star. This is called batch learning or offline learning, whatever we are doing so far. Second, the second thing is the following, which is important and in need nowadays, is the following. You have training data, and
and you have W star, the model. W star means model, some model. Okay. Now the new training data comes in. What you really do is you pick the previous W star and you somehow adjust the W star with respect to the new data point and compute another W star. And the new W star has an impact like the new data point was also incorporated in the training data and everything happened from scratch. This is called online learning. The data is coming and your W is updating by not learning from scratch. Yes. Whatever you have learned so far, you get benefit from it, and the new points that are coming, your learning is happening. जी पूछें आप कुछ नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जैसे गूगल ने जो सर्च इंजन बनाया हुआ है वो ऑनलाइन है, इसलिए कि उनके हर रोज़ नई वेबसाइट्स अपडेट होती रहती हैं और वो उनको फच भी करता रहता है और वो पुराने वाले जो ट्रेनिंग उसने पीछे की हुई है वो उससे अपडेट करते रहते हैं। तो पुराने वाले को कोर्स यूज़ करना है। It is completely hopeless to think कि जब नया डेटा आता होगा वो दोबारा तो वो रीट्रेनिंग करता होगा फ्रॉम स्क्रैच। ऐसा नहीं होता और ऐसा किया नहीं जा सकता। सो पीपल आर नाउ डिस्कवरिंग एल्गोरिथम्स जो इस तरह से होंगे जितना डेटा अवेलेबल है उतनी लर्निंग हुई है और जब नया डेटा आएगा लर्निंग उस डेटा के लिहाज से भी हो जाएगी और ये लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच नहीं होगी। These kind of algorithm, not every algorithm can be made online. No, these kind of algorithms that can be made online or that are designed for these kind of tasks, they are called online learning, and that is a big area of research these days. Because data बहुत ज़्यादा और data stream में आ रहा है, data आई जा रहा है, data stream आ रहा है। Incremental learning, you can call it increment. By the way, incremental learning is also a synonym kind of word used in the literature. So लोग incremental learning भी इसको कहते हैं, कुछ लोग online learning कहते हैं. So that kind of stuff. और मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली होता ही है बहुत सारे Nowadays, data is too much and data is coming in. अब वो ऑफलाइन वाली चीजें जो है ना क्लासिकल until and unless कि आपके पास प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें लेट्स से बड़ी खास किस्म की प्रॉब्लम है उसमें डेटा पॉइंट्स बहुत कम है डायमेंशन बहुत ज़्यादा है so there I mean you can think of the batch learning otherwise online learning is practical to have and this gradient descent can be modified and this is one of the most popularly used online algorithm the gradient descent it can be modified to make it online and the algorithm is known as stochastic gradient descent it's a difficult name with a very simple concept मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा and this is the algorithm जो मैं भी आपको थोड़ी देर बताऊंगा actually advanced versions of it that are used in most deep learning big networks today जो मैं भी आपको simple algorithm clear yes सर हमारे पास दो हमने ट्रेन किए मॉडल्स दोनों को मर्ज कर रहा है yes so these are called this is called ensemble learning that is something else ensemble learning is the following you have several models so W star 1 W star 2 W star 3 W star 1 or you may have for example you have learned a linear regression for the same training data and that's W star 1 or the model 1 then you have logistic regression for the same training data then you have another model for the same training if you have several classifiers for the same training data is there a way to merge them together to get a final classifier so this is called the ensemble learning and this is different than online learning this is not exactly online learning but this is different than online learning but this is how this is one way to maybe explain this is one way to ensemble or to combine different models if you have and then to make one model hopefully very stronger than individual ones hopefully very stronger than the individual ones and here is the idea and I will tell you one real example where they have done this ensemble and that's fascinating पर ये याद रखिएगा कि हमने अलग से सिस्टम है और हमने 10 मिनट सॉरी बस ठीक है आपको एक बात याद so 5 Don't forget that. so there are several constraints today okay
So let's say this is model 1. So let's say this is F. This is Fi. This is model 1. Okay, Fi. And if you give a test point to it, it gives you prediction. It has its own parameters. It has its own W's. So this F1 might be a linear regression. Remember, our predictor is this. Fxt, it gives us the label. Okay? It has inside it W. These are the parameters जो इसने learn किए हुए. Make sense? So I'm writing this as f of wi. Now fi, and then I write f wi. यानी ये ith मॉडल है और इसके अपने जो पैरामीटर्स हैं वो W. ठीक. Clear? And I have several of these. So on training data, I have several of these. अच्छा. मेरे पास एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन पड़ा हुआ है. एक ही ट्रेनिंग डेटा था उसमें एक बार लीनियर रिग्रेशन अप्लाई की, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई की, ये किया वो किया वगैरह. According to their lambdas, according to their cross validation, they work hard and they come up with the best model they have. And these are the best models. And I have let's say 10 of those, 7 of those. Clear? इसको बिल्कुल इस तरह से समझना है कि मैंने आपको ट्रेनिंग डेटा दिया और आप सबको कहा कि जो मर्जी करके लाएं, गिव मी द मॉडल्स. तो एक स्टूडेंट ने अपने तरीके से कोई मॉडल लर्न किया, दूसरे ने अपने तरीके से, and I have let's say 60 students. And 60 students they come up with the best model on the same training data. Make sense? Okay. Now what I will do is the following. So this is the training data. This is the training data that I have given to you. Okay? And I have given to you all this training data the same way. इस ट्रेनिंग डेटा को आपने ऑडिशन किया होगा, क्रॉस वैलिडेशन की होगी, जो भी किया आपने अपना मॉडल बेहतरीन ट्रेन करके. Yes? This portion of the data I will use as training data for me. अब ये जरा ध्यान से देखिएगा. ये मैंने आपको दे दिया है. ये मैंने आपको दिया था. ये मैंने अपने पास रखा हुआ है. ये ट्रेनिंग ही है. और ये मैंने कोई टेस्ट सेट रखा हुआ है जो भी क्रॉस वैलिडेशन सेट है. अब मैं कर पाएंगे. I have a lot of models. I will give this data, which is the, और इसके labels भी मेरे पास हैं. Let me call it x2, and I will apply w. इसको w की बजाय मैं इसको alphas कह दूँ. ये w यहाँ पर यूज हो गया. These are the other parameters. Alpha I varies from 1 to n models. Sorry. And I want this thing to be equal to the label of, let's say this is some point from here, this is some point from here, xj. I want this thing to be equal to yj. Yj. So minus yj whole square. I will minimize this thing. Yes. So I will learn over the learned models. I will combine the models, but I will combine them in a way which model should get what weight in the combination. I will learn those weights. इसका मतलब है जो आपको भी आप लोगों ने लर्निंग बताई है, पहले से हमारे पास 1000 मॉडल्स पड़े हैं. अब जो डेटा है मैंने एक उसको ट्रेन कर लिया, ठीक है, वो लेकिन वो सी डेटा था. पहले नया डेटा है, ठीक है, लेकिन है उसी कैटेगरी का, लेकिन उसके ऊपर जैसे ओसीआर की एवरेज देते हैं. मुझे जो आपने सैंपल डेटा दिया था ट्रेनिंग करने के लिए, मतलब और था मैंने सारा कर लिया, और डेटा को 1000 और सैंपल से कर लिया. अब जो मेरे पास नया है वो 10 और आएगा, उसका मैंने अलग अलग कर लिया. अलग नहीं बनाया. उसका मैंने अलग से उसको ट्रेन किया. ठीक है. क्योंकि ऑनलाइन 10 ही होगा, नया जो आएगा वो मर्ज करते हुए हम रिकाउंट कर सकते हैं, फिर दोबारा सारी नहीं देखें कर सकते हैं. मैं ऑनलाइन को और Ensemble को आपस में मिक्स कर रहे हैं. ऑनलाइन इज समथिंग एल्स, Ensemble इज समथिंग एल्स. Ensemble ये है, और मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ. मैं जस्ट और मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी बता दूँ कि मैंने दोबारा कंबाइन करने के लिए यही डेटा यूज क्यों नहीं किया. क्योंकि ये डेटा हर मॉडल जो है ना इस डेटा पे फिट हुआ है. अगर मैं इसी को यूज करूँगा ना, इसी डेटा को, तो हर मॉडल को ज्यादा वेट मिलने के चांसेस हैं. एक मॉडल है फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन, वो कोई 35 पॉइंट्स हैं जिनको बड़ा सही क्लासिफाई कर रहा है. अच्छा. वो 35 पॉइंट इसका वेट हाई करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ट्रेन हुआ है. मैं इसको अनसीन डेटा दूंगा और अब देखूंगा कि इन कॉम्बिनेशन में किस क्लासिफायर को वेट ज्यादा मिलना चाहिए, किस क्लासिफायर को वेट कम मिलना चाहिए.
और इस पे भी मैं क्रॉस वैलिडेशन करूँगा पहले अपना डेटा सेट में होल्ड किया हो इसमें क्रॉस वैलिडेशन करूँगा इनको कंबाइन करूँगा एंड दैट्स इट एनसेंबल क्लासिफायर। लेकिन इसमें भी तो फिर सब मैं बायसनेस शो कर रहा हूँ ना, जो मैंने अपना मॉडल ट्रेन किया है सारी एंगल उसी के ना, बाकी मतलब उसके मुताबिक सबको कर रहा हूँ। नहीं देखिए ये जो मॉडल मुझे रिपोर्ट हुए ना इसमें से कुछ मॉडल बहुत अच्छे होंगे कुछ मॉडल बहुत अच्छे नहीं होंगे कॉम्बिनेशन में कुछ मॉडल एक का वेट जमा दूसरे का वेट हो सकता है कंबाइन में भी अच्छे चले। मैं अपनी कोई बायसनेस नहीं मैं हाँ एक मेरी बायसनेस ये कि मैं इनको कंबाइन कर रहा हूँ लीनियर रिग्रेशन के तरीके से। अब मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ ये तो मुझे गिना नहीं ये मुझे गिना नहीं कोई पॉइंट जब मैं कंबाइन कर रहा हूँ मॉडल्स को आई एम कंबाइनिंग देम लीनियरली I can combine them in another way. So there are several. Ensemble learning is a full, paradigm. This is the simplest way. But this is a very cute way और इसकी मैं एक example भी आपको देता हूँ. Netflix ने क्या किया था? Netflix ने उन्होंने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए लोगों को डेटा दे दिया अच्छा कि और पूरी दुनिया में वो कर दिया गया हम आपको जिसका बेस्ट मॉडल होगा उतने पैसे देंगे एंड स्टफ लाइक दैट। मॉड्यूल अच्छा ठीक है मतलब प्रेडिक्टर हाई करेगा उन्होंने ट्रेनिंग डेटा दे दिया एंड कम अप विद योर प्रेडिक्शंस एंड सबमिट योर मॉडल। हम अपने टेस्ट डेटा पे उसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इसका मॉडल बेहतरीन काम कर रहा है। What they really did is very charming. There was thousands and thousands of models, very well trained, बहुत ज़्यादा effort लगी थी उसपे। उन्होंने वो सारी ली और बाद में सैंपल करके अपना क्लास लगाया। See that? This is really smart. I mean, this is smart. ये ऐसे ही है जैसे मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवानी हो सारे स्टूडेंट्स को दे दूँ वो अपने अपने मॉडल देखें एंड देन आई जस्ट मेक एन सैंपल। This is incredible. Okay, but if this can be done in parallel, then it's okay. If you are going to do it serially, I mean you are the one that is designing several models and then sampling them. This is time taking. Yeah. So Netflix के case में this makes a lot of sense what they have done. This is सही है? Okay, so that was so there are ways to combine different models. There are ways to combine different models. That's a full paradigm. I just told you the very simplest one. But this is different. Online learning is a bit different. Online learning means the data is either coming in a stream or the data is so large that you cannot handle that data in a batch mode at once. You lost some then you can consider the data as it is coming in. Although the data is with you, but data is so large, you can stream the data from your hard disk to your memory, and you can apply these algorithms. And these are the algorithms and online algorithms. And the most popular is the that is the state of the art in the state of the art machine learning for deep learning. ये algorithm जो मैं अभी बता रहा हूँ, advanced variants of these ये use होते हैं. Basic idea is the following. Clear? तो वो मैं आगे बता रहा हूँ. And I will not go into the details of this. I will explain this in detail. Actually, we will be implementing this in the last 4 weeks of this course when we discuss deep learning. We will implement this. Right now, I'm just giving you an introduction. Okay. And this W code is banned. Okay. W code is banned, and this, and then for the new time the W code is. तो अगली दफा हो जाएगी तो W code से W को बन चुका होगा and stuff like that. So you swap. So what you really do is. W always equal to W और लेकिन ये यहाँ पे आपको वेरिएबल सेट करना पड़ेगा ठीक मैं कोई इक्वल हो जाएगा हाँ ठीक है वो कर लेंगे हाँ सर all I'm saying is you have to go through this and you have to stop and they are equal और यहाँ कुछ वेरिएबल्स चेंज कर लीजिए just to make it more clear. Make sense? Or you can call it let's say or whatever. I mean you can implement this. What I'm going to tell you is this: to compute the derivative of the add function, this is just a vector of sample numbers. And to compute this vector, implementation it requires training data. It requires training data. So you give the training data to it, you specify the learning rate, you specify the W code, and you get the W.
सो वो जो हमने डेरिवेटिव निकाला था उसमें ट्रेनिंग डेटा देंगे वो पूरी क्वेश्चन हमने लिखी थी रिमेंबर जब हम लैब 5 भी कर रहे थे क्लास में तो आई गेव यू अ वे डेरिवेटिव ग्रेडियंट वेक्टर कैसे निकालते हैं एंड इट रिक्वायर्स अ डेटा मैट्रिक्स एंड द लेबल्स and you come out. Make sense? If you supply the data, then the derivative is computed with respect. So W is updated by seeing all the data, then the W is updated. Yes? Another way is you update W by iterating. So you give just one example, and with respect to one example, update W. Then what you really do, यहाँ पे until और लिखा हुआ सारा. Then what you really do is you say okay, W old is really W new. This is the first example. Then you supply the second example. अच्छा. Then you supply the second example. And see with respect to your second example, what amount the W is changing. अच्छा. Then you supply the third example. Then you supply the fourth. So now you are seeing that this is the loop. Okay? This is the loop. This is a loop, right? This is a loop. For every point. Yes. Yes. So give one example, change the W. Then give the second one, change the W. लेकिन जो पिछली example में W को change कर दिया हुआ है, take that W as the initial point. अच्छा. So बिल्कुल स्टार्ट में हमने रैंडम इनिशियलाइजेशन दी थी फिर एक एग्जांपल ने W को जितना चेंज किया दूसरी एग्जांपल के लिए दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है. फिर तीसरी एग्जांपल के लिए जो सेकंड ने आपको रिजल्ट दिया था दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड सो ऑन once you went through all these endpoints you have some shape final W new see whether that final W new is closer to your the W that you started with from the very start. If that is the group, if that means it doesn't change. If it changes, then move on and supply one by one and so on. मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा से देखिए. This is the W I started with. Iteration शुरू करने से पहले मेरे पास कोई W था. Iteration शुरू करने से पहले. सही है? ठीक है. I went through all this. अच्छा. Then I have a W. अच्छा. I will check whether this W and the W now I get whether they are close. अच्छा अच्छा. If they are not close, then I will move from here onwards. But now this W will be the result of the previous iteration. I'll start from that. Make sense? जी जी जी. करते नहीं ये iterations करते हैं. Already भी हम ऐसे कर रहे थे. ये repeat loop. ये सिर्फ वो है. पहले ये सारी की सारी examples एक ही वक्त में W को अपडेट करेंगे. अब एक example जो है वो W को अपडेट करेंगे. पहले भी ऐसे ही होता था सारी एग्जांपल्स एक छोटे W को हर एग्जांपल अपना कंट्रीब्यूशन दे रही थी और W एक ही वक्त में वेक्टराइज्ड वे में अपडेट हो रहा था. जी मैट्रिक्स से फायदा उठा रहे हैं. मैट्रिक्स का तो लेकिन इसके साथ कुछ और भी चीजें हैं सर ये समझ आ रही है कि ऐसे कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं हम अगर हम ऐसे कर रहे हैं और कहें कि दिस इज इक्विवेलेंट टू समहाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू बैच ग्रेडियंट डिसेंट अगर हम ऐसा कहते हैं तो जब भी हमारे पास लास्ट W स्टार पड़ा होगा और अब एक नई एग्जांपल आई है हमारे पास W स्टार आप यहाँ से निकाल के आ सकते हैं अब एक नई एग्जांपल आई है तो वो डेरिवेटिव से हम उस एग्जांपल के लिहाज से निकालेंगे और W निकाल कर देंगे एंड दैट एग्जांपल इज इनकॉर्पोरेटेड इन द ग्रेडियंट सेट. तो समझ में सर ये लेंथी प्रोसेस में दिस इज टाइम टेकिंग. तो डाटा भी तो हमारे पास 1 by 1 रिटर्न है ना थाउजेंड ऑफ डाटा आ रहा होगा एक टाइम के अंदर तो वो फिर सबके लिए सब डाटा पॉइंट्स के लिए चाहिए. So there is a gradient called mini batch gradients. तो क्यूमुलेट करके फिर भेजता है. उसमें बैचेस बनाते हैं आप. बजाय एक पॉइंट देने के आप लेट्स से 100 पॉइंट्स को करते हैं 100 पॉइंट कैशे में रख के फिर इकट्ठा रखते हैं. यानी वो कहेंगे डेटा एक एक करके नहीं आ रहा डेटा मुझे 100 के चंक्स में आ रहा है तो आप एक पॉइंट आप दें उसको एक बैच दे देते हो. ये पूरे पॉइंट्स ये तुमने 100 क्यूमुलेट के रख लिए फिर तुमने इकट्ठा क्यूमुलेशन मिनी बैच ग्रेडियंट्स. तो सर ये सैलरी होगा ना मजे की होगी किसकी ये I'm not sure theoretically. I mean, I cannot say theoretically yes they are. I have to look into नहीं it. सर ऐसा तो समझ जो नया डाटा आ रहा है उस पे कोई हमने मॉडल से नहीं फिट किया हो वो तो बाद में फिट हो रहा है इस तरह की तो नहीं ना हो सकती. I cannot say theoretically
जी एक देखें ये जो जो ओरिजिनल हमने देखा था दैट वाज ग्रेडियंट डिसेंट और बैच ग्रेडियंट डिसेंट। एक एक एग्जांपल अप्लाई करेंगे। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक रैंडमनेस को कहते हैं। यहाँ पे कहीं पे रैंडमनेस नजर नहीं आ रही, ठीक है, तो मैं रैंडमनेस डालता हूँ इसमें, ठीक है। इधर बस if xi yi is picked randomly from training data, then the performance in the expected sense, the expected performance of stochastic gradient descent is equivalent to expected performance of batch gradient descent. There is a proof कि जो points आप उठा रहे हैं वन बाय वन सप्लाई करने के लिए, if these points are picked randomly, not in a sequence, so जो पहला point है जिसको आप पहला point कह रहे हैं, it should not be the point in a particular sequence. You pick it randomly and you update the weight. The second update happens with a random training point. The third update happens with a random training point. If you pick the points randomly, then the performance means the error, expected error, or the convergence or stuff like that. The stochastic gradient or the gradient with one example at a time is equivalent to batch gradient. Make sense? And there is a probabilistic proof for it. If you have randomness and stuff like that, you randomly pick and stuff like that. Oh. So that's stochastic gradient. Now how to implement this? Very easy. You just call rand1 function on your training data, just shuffle them and then pick one by one. Yeah. But before every iteration you have to do this. Before every iteration. अच्छा You have to perturb the data. This is the theoretical thing. यानी अगर आप डेटा randomly pick करेंगे, then having one by one example and having them in batch, they are no longer different. And there is a theoretical proof for it. That's it. Make sense? Now you are gaining the benefit of batch gradient descent, which make a lot of sense, by not implementing it in a batch mode. So this is one online algorithm. I mean, the new data comes in, you adjust your previous W star with respect to that. And how you adjust that, I mean, उसके stopping criteria भी कुछ तरीके होते हैं. कब तक वो करना है, कब तक adjust क्या एक iteration करके गुजारना ये करते रहना, there are ways to stop that. But I will go into the details and the deep but these are online algorithms. Mini batch क्या है? You have full batch and you have one example at a time. Mini batch ये है, आप अपनी पूरी जो ट्रेनिंग सेट है जो आपको अवेलेबल है, convert them into different batches. I mean, this batch is just a portion of the training example. Maybe 200 examples or 100 examples. Fix a batch size. Batch size fix क्या करेंगे? It depends upon कि कितना batch size आपके लिए computationally ठीक है. यानी it is you are handling it in memory, cache, and everything becomes fast. What should be that size? It completely depends upon your computer, your system, and stuff like that. Make sense? उतना बैच साइज फिक्स कर लें और बजाय एक डेटा पॉइंट देने के पूरा बैच उसको दे दें, पहला बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच. But remember, you pick the batches randomly. Make sense? In practice, with big data, in practice, mini batch works fastest. In practice. So this is the algorithm, mini batch gradient descent, which is somehow the combination of batch gradient descent and stochastic gradient descent that is working, and some advanced versions of it that are working in the deep neural networks today in the Amazon web services and stuff like that. These are the things that work. Make sense? Okay, great. Now moving towards the others. I just discussed these because हमने gradient descent की बात शुरू की है और इन पर्टिकुलर मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था लास्ट क्लास में कि जो अब तक हमने पढ़ी हैं चीज़ें वो कुछ इस तरह की हैं कि ट्रेनिंग का अवेलेबल है तो आप
उसको मॉडल ट्रेन कर बैठे हम क्लासीफाई करते थे। उसकी एप्लीकेशन कुछ यूँ है कि उस एक स्टूडेंट के पास एक मोबाइल है लेट से, और उसने कुछ तस्वीरें उसके पास हैं, वो तस्वीरें टैग कर देता है अपने सिस्टम में, ये अख्तर है, ये असलम है, फिर मजीद तस्वीरें ऐसा मजीद टैग कर देता है उसको। तो उसके मोबाइल के अंदर लोकली नए नए लोग ऐड हो, नए नए पर्सन्स दे आर बीइंग एडेड, ठीक है। अब वो चाहता है कि नेक्स्ट टाइम वो कोई तस्वीर ले रहा है तो जो लोग ऑलरेडी उसने टैग किए हैं अगर उनमें से कोई है तो वो अपीयर हो जाएगा, ये तो असलम है, मेक सेंस। या एक सेट ऑफ इमेजेस के ऊपर वो क्रॉलिंग करें और उसमें देखिए कि कौन कौन से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनकी तस्वीरें कौन कौन सी हैं, कहाँ पर है। सो दैट इज अ स्मार्ट गैलरी प्रोजेक्ट दैट इज गोइंग ऑन एज एन एफआईपी। उसमें उसको बेसिक मसला ये था कि मैंने जो ट्रेनिंग कर ली हुई है वो 35 लोगों पे कर ली है, 36वां बंदा मैंने ऐड करना है, नया बंदा है, वो ये भी मेरा दोस्त है, इसको मैंने ऐड करना तय कर दिया। शुड आई रीट्रेन एवरीथिंग? विवास में आ रही नया बंदा है, नई क्लास का बंदा आ गया, शुड आई रीट्रेन एवरीथिंग और व्हाट शुड आई डू? विवास में आ रही, या एक ही बंदे की कुछ तस्वीरें थी, कुछ तस्वीरें वहाँ आ गई, व्हाट शुड आई डू नाउ? मुझे पता है ये फलां है। तो so the answer is online। और मैंने उसको कहा था कि आप इस तरह से करें कि आप एक सर्वर बना लें, सर्वर पे सारा डेटा फेंकते हैं, वो ट्रेन करके W स्टार आपको दे देगा, W स्टार से आप करते हैं। सो उसका स्टैंस ये था कि नहीं, मैंने हर चीज़ लोकल रखनी है अपने मोबाइल के ऊपर, मैं नहीं चाहता कि मेरा डेटा कहीं पे जाए, आई वांट एवरीथिंग टू बी लोकल विद रिस्पेक्ट टू मी। सो मेरे मोबाइल पे मेरे टैग किए हुए कुछ लोग होंगे, आपके मोबाइल पे आपके टैग किए हुए कुछ लोग होंगे, किसी और के मोबाइल पे उसके टैग किए हुए कुछ लोग होंगे। एवरीवन हैज इट्स ओन स्मार्ट गैलरी, दे हैव देयर ओन मॉडल्स। हाँ, तो आई डोंट वांट अ सर्वर एंड दिस इज स्केलेबल। सर्वर विल बी हैंडलिंग हाउ मेनी पीपल, हर बंदा आपको भेज रहा होगा तो so to make it local and to make it efficient or memory management and all these considerations, this was one thing that came in my mind. So मैं मॉर्निंग में भी चुका स्टूडेंट था तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया, सॉरी आई फील कि मैं आपको बताऊँ ऑनलाइन लर्निंग इज समथिंग दैट इज adaptive and you can call it adaptive learning, you can call it incremental learning, so there are ways. And now research is moving in that direction very actively because there is need right now. It's need. Clear is it? Okay, got it. Any question regarding this? सर आपने स्टार्ट में कहा था कि जो हम डिजिटल अपलोड करते हैं और उसके साथ टैग आता है, उसका क्या फ़ायदा क्या है? तो उसके ऊपर डाटा लर्न करने का नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि nowadays बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेटा, डिजिटल डेटा अपलोड करी जा रही है, सर्वर्स पे डेटा अवेलेबल हो जा रहा है, आम बंदे को बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल हो जा रहा है। सो नाउ डेटा इज टू मच। अगर आपको लर्निंग फॉर एग्जाम्पल अगर आप लर्निंग करने जा रहे हैं, you want to detect for example cats versus dogs versus horses, you'll be having plenty of data available, too much data, और नया डेटा आता है, लोग ये देखेंगे वेरी मेरी कैट है कितनी अच्छी मिली है, फेसबुक पे 40 तस्वीरें अपनी मिली की अपलोड करते हैं। If you know that is a बिल्ली और उसकी तस्वीर भी है, you should incorporate that into the training data, नहीं? अगर डेटा टैग करके लोग आपको मिलेंगे, and that tagging is available now. Legalized data, new legalized data is available and getting available. अब फेसबुक पे वैसे अगर किसी पिक्चर भी लगाया तो वो ऑप्शन आ जाता है कि इस बंदे को टैग करना चाहिए, उसी प्रोफाइल पे। So इसी वजह से now there are ways to upload the training data. लोग training data upload कर रहे हैं, legalized data upload कर जा रहे हैं, और data बहुत ज़्यादा available हो रहा है। Second thing, computational power बढ़ती चली जा रही है. Now you're looking towards GPUs and parallel and stuff like that. पहले डेटा भी नहीं था, और अगर कोई बहुत ज़्यादा डेटा लेके आ भी जाता था कि यार मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा था तो कंप्यूटेशन पावर नहीं थी। Now you are enjoying the two things together, and that's why these new kind of ideas and stuff they are very hot today. Clear? लेकिन अगर फेक जो डाटा है डाटा करने लेंगे वो इसमें फायदा यूज नहीं है, इनफैक्ट उनके हार्मफुल है, इसमें जरूरत लगेगी। ये हम इसकी बात पहले एडिशन करते हैं, ठीक है, एडिशन के खिलाफ है जो कि बहुत बड़ा मसला है, अगर फेसबुक की बात करें बहुत सी गलत टाइप होती है, इसकी वजह से So you always assume the noise in the data.
noise is very high, you cannot do anything about it. I mean, Yes. this is not something. Then you go for data pre-processing and then you cannot rely on the. If your labels are wrong, आप एक machine को कह रहे हैं कि इसको इस पे मैप करना है और जिस पे मैप करना है that label is wrong and it is wrong random. Exactly. Then the machine can never learn anything. Exactly. लेकिन the point is कि फेसबुक के ऊपर डाटा अपलोड होता है वो बहुत सारा खराब भी होता है। बहुत सारा नहीं डेटा प्री प्रोसेसिंग ट्रेनिंग डेटा को बनाना आई मीन मैं आपको ऐसे ट्रेनिंग डेटा बता सकता हूँ जिनको एक डेढ़ साल लगा है प्रिपेयर करने में सो दिस नॉट के डेटा अवेलेबल है डेटा अवेलेबल आई मीन वी कैन से दैट द डेटा अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू कुछ अर्सा पहले डेटा उस तरह से अवेलेबल नहीं था बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय प्रिपेयरिंग इट फॉर द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सो डेटा प्रीपरेशन इज द स्टेप जिसको आपको करना पड़ेगा पहले तो डेटा अवेलेबल ही नहीं था ना अब डेटा अवेलेबल है नाउ यू हैव टू प्रिपेयर इट यस जैसे हमने टैग गलत लेवल होता है मैं किसी के अपलोड करता हूँ नीचे में टैग गलत करता हूँ तो वो ट्रेनिंग डेटा में जाएगा तो उसका क्या आउटपुट होगी उसको डिस्कार्ड हो जाएगा या उसको उसके रिलेटेड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हमेशा होगा या नॉर्मली ऐसा होगा तो आपको बीच में एक वेरीफायर रखना पड़ेगा जब कोई टैग करेगा तो वो प्रूव करेगा तो वो टैग आगे आएगा नहीं तो नहीं आएगा आई मीन these assumptions they will come up with a solution but the solution will no longer be automatic और वो नहीं लेकिन उन्होंने कई लोगों को ऑटोमेट कर दिया है मतलब यानी फॉर एग्जांपल मुझे कई दफ़ा किसी ने टैग किया और मैंने कहा नहीं मैं नहीं वो चलो फारग हो गया मतलब आप